आप देख रहे हैं अपना समाचार। And how was your experience as a producer? The first thing I got was obviously the script. The script came through from Shwetaabh, and I'm working with someone in UK called Adam Ralston. Adam Ralston is a person that made a street cat named Bob, and it's a very big production that was there, and we've been looking for projects, new type of projects, and isko dekh ke jo tha script dekh ke it's something which was very unique, you know, jo tha to मैंने एडम को फ़ोन किया था. I said, listen Adam, ये ज़रा देखो, ये तो कुछ, this is something big, and the story was very good, and I was like, yeah, this is something very unique and very different, and I think the credit goes to Tarun, who's obviously the director, the writer. Shwetaabh was obviously, you know, very good at convincing, because we'd looked at a lot of projects. It wasn't like this was the first project that came from India. We'd looked at many projects, and this one just resonated, you know. And I think also जो सतीश सर है, उसने भी पढ़ के, उसने भी देख के, उसने भी देखा था कि ये कुछ है. राज बाबर भी आया था, अनूप सोनी भी आया था, ये सब स्क्रिप्ट से आया था. तो इसलिए इसको देख के मैंने बोला था ये तो करना है, you know, इंडिया के लिए ये तो करना है. तो श्वेताब, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे सर ने कहा कि सब एक्टर ऑन बोर्ड आए, और आप जो है एज अ प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है, कितना चैलेंजिंग था. पहले आप प्रोड्यूस कर चुके हैं एक सीरीज, तो ये फिल्म के अंदर एक्टिंग करने का मतलब कैसे डिसाइड किया आपने, और क्या थोड़े नर्वस थे जैसे मैंने स्टार्ट? मतलब हाँ, ये डिसीजन एक्चुअली तरुण का था, मेरा एक्टिंग करने का. तो नर्वसनेस तो उतनी नहीं थी, बिकॉज ट्रेंड एक्टर हूँ, FTI से एक्टिंग का ही कोर्स किया था. उसके बाद में प्रोडक्शन में गया, बिकॉज ये भी एक चीज़ थी जो मुझे इंटरेस्ट करती थी. तो थोड़ा क्योटिक तो हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन संभालना और एक्टिंग साथ में करना, वो भी एक लीड की तरह, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. बट जब आपके साथ टीम अच्छी रहती है, और एक बार जब ऋषि आ गए ऑन बोर्ड, तो बहुत सारी चीज़ें थी विच ही वॉज मैनेजिंग, you know, तो that took off my stress in a way, because Rishi is also very hands on, I'm also very hands on. तो हम दोनों का मिलके like as a team work हमने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया, मतलब at least till completion. अब तो थिएटर में देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, but we are hoping for a great response anyway. We have seen the great locations in the trailer, so tell us about the locations. Have you visited during the shoot, or you were there with them? I mean, what we did was we obviously were working closely with them and understanding where the shoots are going to be, looking at all the photos and all the, you know, in HP, Himachal Pradesh, Kamparoga. So certainly with I own a production house called Studio RA. So what we tend to do is we leave the creativity side to the director, to Shwetaabh, to decide. You know, we don't want to interfere in the creative process. I think that's very important, because really the script is there, and then the locations have to be chosen by the director. You know, they really have to be hands-on, and I think so much of it just comes down to believing in, you know, who you're working with, and believing in the people. And someone like Shwetaabh, he's got such great credibility in terms of the way that he presents himself, the way that he talks, even though it's his debut, iski pehle film hai. But फिर भी, for me personally, I think he's got an immense screen presence. It comes across, you know, one thing बहुत important है, जब you know editing खत्म हुआ था, तो producer cut मिला था. हम Adam and me, Adam वो तो ब्रिटिश है, तो उसको हिंदी नहीं जानते, तो उसने श्वेताब्ह ने सब टाइटल्स करा दिया उसका. तो उसने देखा था मेरे प्रोजेक्टर के ऊपर, पूरा मैंने देखा था, एंड यू नो वो भी हैरान हो गया था कि इंडिया में इतना अच्छा प्रोडक्शन बन सकता है, यू नो. एंड उसने भी बोला था जो नेटफ्लिक्स के ऊपर है, हिंदी को छोड़ दो, जो कोरियन है, जो यूके में है, जो अमेरिका में है, जो अमेरिका में है, ये टोटली यूनिक है.
and it's totally perfect for OTT, but also it's perfectly very good for cinema because it's got two mediums, and that's why we got Red Chilli Entertainment that actually did the grading for the film, the sets, the landscapes. It's visually a treat, to watch, and seeing casts like Raj Babbar on the set with the landscape behind. You'll actually be immersed by the experience. You'll be sitting in a cinema hall on the silver screen, and you'll get immersed. It's a visual treat, and the story is totally unique, totally different. I come from a background where I'm very critical of stories. जैसे आप जब मेरे wife भी है, वो बोलती है जब मैं film देखता हूँ, मैं बोलता हूँ ये ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था, ये कैसे हो, ये कैरेक्टर को ये नहीं, ये होता है. But जब मैं मिर्ग को देखता हूँ और स्क्रिप्ट को पढ़ा हूँ, फिर भी थोड़ा सा मुश्किल है कि जैसे अगर आपका कोई क्रिटिसिज्म है, ये उसने ऐसे किए, ये इसके, ये स्टोरी में actually it becomes real, and it actually says हो सकता है, even though the story is quite wild, right? फिर भी आप बोल सकते हैं ये हो सकता है. And I think that is what is really unique about the story. It's श्वेता, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे ऋषि ने कहा, ऋषि खुद अब्रॉड से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने स्टोरी को ट्रस्ट किया, आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि पूरा प्रोडक्शन हाउस और अपने एक्टिंग को भी साथ में लेके जाए. थोड़ा सा बताइए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि कैसे आपने पूरा कितना चैलेंजिंग रहा आपके. देखिए, हम लोग का एक तो पहली बात, ऋषि अब्रॉड से बिलोंग करते हैं, बट इनके रूट्स टोटली इंडियन है और इनको पता है कि यहाँ पे चीज़ें कैसे वर्क करती हैं. तो वो चीज़ का होना हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा और बहुत क्लियर था. जैसे ऋषि ने भी बताया कि कभी क्रिएटिव साइड में इंटरफेयर नहीं करते हैं, और एक डायरेक्टर के लिए या एक क्रिएटिव पर्सन के लिए वो एक बहुत बड़ा वेपन है, स्ट्रेंथ है उनके लिए. तो लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर थी कि ऋषि विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. I believe those questions made this process stronger, क्योंकि ये जो हमसे सवाल पूछते थे उनका जवाब ढूंढते हमें बहुत सारी चीज़ें मिली है इस मेकिंग में, इस फिल्म में, हर चीज़ में. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इन्होंने मुझे दी है, सिर्फ ऐसा नहीं कि इन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ही हैज़ इवन शेयर्ड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इनका ये नहीं होता था कि मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें कहीं कुछ वो करूँ, ये सवाल पूछे सो दैट आई गो फॉरवर्ड. ठीक है, कि इनको जो सवाल होते थे वो वैसे सवाल होते थे जो आपकी कहानी को, इस प्रोडक्शन को आगे लेके जाएंगे. ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कभी लगा नहीं. ऐसा लगा हम लोग सब वी आर ऑल वर्किंग फॉर वन प्रोजेक्ट एंड फॉर वन एम, विच इज़ टू गेट दिस फिल्म एज वाइड ऑडियंस एज पॉसिबल. जितने लोगों तक लेके जा सकते हैं लेके जाएंगे, और अपने आप को भी आगे लेके जाएंगे साथ साथ. बिकॉज अगर आपकी फिल्म कुछ नहीं कर सकती है तो आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते. नो मैटर इफ़ यू इन्वेस्ट 10 करोड़ इन योर फिल्म, 100 करोड़ इन योर फिल्म, इफ़ योर फिल्म डज नॉट रीच दी ऑडियंसेस, तो आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे. ऑल्सो मेरा और एक सवाल था, जैसे ऋषि जी ने कहा कि ये फिल्म जो है OTT, और हमको ऐसा लगा कि थिएटर में भी आनी चाहिए. दोनों से जानना चाहूँगा कि वाई नॉट ऑन OTT, वाई ऑन थिएटर्स, लाइक क्यों थिएटर में रिलीज करना चाहिए? OTT में it's important. वो तो it's a very important medium, as we know. ये global है. But cinema के ऊपर अगर आप देखेगा, वो तो cinematic experience जो होती है. जब से मैं छोटा था, मैं भी सिनेमा जाता था, तरुण भी जाता था. And we've talked so much about the characters of how important it is. And अगर OTT है and cinema है, ये दोनों ये सेपरेट हो रहा है, एंड ये सेपरेट नहीं होना चाहिए. तो ऐसे नहीं है जैसे ऑफर आ गया OTT से, जैसे मेरे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, स्टूडियो RA से आ गया, तो चलो लेट्स सेल इट टू OTT प्लेटफॉर्म. What my philosophy is, and we discussed this together, me, Shwetaabh, everyone, we said, look, we're gonna, OTT में आएगा, वो तो आना है, but why not do cinema as well? Why not? It was a question, why not? And then we said, कैसे करें? Should we do it? Yeah. And we did it. And we did it. और मेरा भी वही रहता है कि लाइक ऋषि सेइंग कि जैसे आप क्रिकेट को भी देखेंगे, क्रिकेट इज अ स्पोर्ट जिसमें 3 फॉर्मेट है. T20 भी है, वनडे भी है, टेस्ट क्रिकेट भी है. लेकिन आप किसी भी क्रिकेटर से अगर पूछेंगे कि भाई तुम क्या देख के क्रिकेट में, एटलीस्ट फॉर दिस जनरेशन, आगे क्या होगा हम नहीं जानते, और आप क्या खेलना चाहते हो, हमेशा बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट, बिकॉज दैट इज अ क्रिकेट. तो हमारे लिए टेस्ट क्रिकेट है सिनेमाज.
क्योंकि हम भी बचपन से ना फिल्मों में क्यों, वाई डिड आई गो टू FTI, वाई डिड ऋषि वांट टू इन्वेस्ट इन फिल्म्स, बिकॉज ऑफ आवर लव फॉर सिनेमास। हम सिनेमा में जाके फिल्म देखते थे फैमिली के साथ, एक एक्सपीरियंस होता था, फ़ोन वोन सब अपने बगल में रख दिए। अभी आप भी देख लो, आई एम श्योर कि हम लोग भी OTT पे कुछ देखते हैं, लोग खाना खोल के लैपटॉप पे कुछ भी देख सकते हैं, टीवी पे देख सकते हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, टीवी पे कुछ चल रहा है। दैट इज़ नॉट द एक्सपीरियंस फॉर विच वी आर मेकिंग अ फिल्म लाइक मिर्ग, बिकॉज ये बहुत ही एक्सपीरियंशियल फिल्म है। स्टोरी अपनी जगह है, बट इसकी ट्रीटमेंट इतनी इंटरेस्टिंग है कि आई होप कि जब ऑडियंसेस इसको देखेंगे तो बाहर आके बोलेंगे, जैसे ऋषि ने बोला, एडम ने बताया था, गाय फ्रॉम UK जिसको हिंदी नहीं आती है, बट समवन हु कम्स फ्रॉम अ लेगेसी ऑफ फिल्म मेकिंग, वो आदमी कह रहे हैं कि भाई मैंने इतना यूनिक चीज़ नहीं देखा है। तो आई एम श्योर कि जब इंडिया के लोग भी इसको देखेंगे, यहाँ पे हमारी ऑडियंसेस, अपनी ऑडियंस अपनी दुनिया की कहानी देखेगी, तो ज़रूर बोलेगी कि यार आई सॉ समथिंग यूनिक, ये मज़ा है, मुझे इन लोगों का काम और आगे देखना है। ठीक है, तो वो उसके लिए सिनेमा सबसे, क्योंकि देखिए OTT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और OTT पे फिल्म जानी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज के दिन में सबसे वाइडेस्ट रीच है। बट आप OTT पे एक बार में देखो, शायद महीने में 50 फिल्में आ जाती हैं, या 50 सीरीज आ जाती है, 50 कंटेंट आ जाता है। आज भी आप देख लीजिए ना, सिनेमा में एक महीने में कितनी चीज़ें आ रही हैं। वो शुरुआत में ही आपको एक स्टैंड आउट होने का मौका देता है, यार ये फिल्म थिएटर में आई थी, या ये फिल्म थिएटर में आ रही है। चाहे लोग हफ्ते भर के लिए लगाएं, 2 हफ्ते के लिए लगाएं, 3 हफ्ते के लिए लगाएं, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि लोगों का नजरिया आज भी सिनेमा के लिए बहुत डिफरेंट है। आज जो रहना चाहिए, सिनेमा हैज टू एग्जिस्ट। जब तक फिल्में हैं, सिनेमा थिएटर्स को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर है एज मेकर्स। ऑल्सो जैसे आपने कहा कि लोग ये कोलैबोरेशन और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करने वाले हैं मिर्ग देखने के बाद। सो क्या और कोई प्लान्स है आगे मिर्ग के बाद, क्या क्या होने वाला है? एनी ऑफ योर अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस आफ्टर दिस? Of course, that studio RA should. Yeah, no, of course. I think there's definitely a slate of films that we want to do, and I think we want to work with talented people like Shwetaabh and like Tarun. That's the main thing. I mean, his production house, they did the work so well. Organization was superb. Even the way that the production schedules were managed. I mean, jab film ban gaye, to agar humne actor le liya, सतीश जी या राज बाबा, इसकी टाइम होती है दिन में जितना प्रोडक्शन डे होने, बट ओवरेज होता है, राइट? राज बाबा आ गया, 2 दिन और ज़्यादा ले लिया, ये वो ले लिया, बट द वे दैट श्वेताब एंड Tarun actually managed the stars, because एक होता है मैनेजमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर सतीश सर was very professional, right? Very professional. Of course. Sometimes some actors might come a bit late, for example, onto set. So you have to be ready, as soon as they arrive, get this camera going, get that camera going, get that da-da-da. Everything should be done so that then it can be executed perfectly. Scene cut ho gaya, cut, and then done. And this is exactly why I wanted to come into India, because what I'm seeing in India or UK mein restrictions zyada hai. India mein it's got a landscape of you've got landscape of color, you've got a culture of film, and it's something that can really be done well. So we definitely want to continue. I definitely want to continue. It's been very interesting, because ये तो business angle का है, मेरा business angle में है, but it's been very interesting with tax credits जो होती है, tax credits भी बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर, the different incentives that are available for international investors. तो navigating through that, जो नया lawyers होता है यहाँ पर, जो it's been a very interesting experience. And it's one where creativity is mixed together with business very well. And I've been very impressed with India. I mean, I would love to do more projects here. I think it's just a really great place to work with. And as I said, Shwetaabh, I mean, all credit goes to him, because he just genuinely, from his pitches as a actor and also as a producer and also pitching in investment, it's like superb. So, a lot of credit to him, honestly, and I think he's going to go very, very far. I hope he can remember me when he's up there. I mean, this will, ये कोई बहुत बड़ी लाइन भी नहीं होगी अगर मैं ये भी बोलूँ कि स्टूडियो आर के बिना ये प्रोजेक्ट नहीं बन पाता, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट, सी द थिंग इज़ कि एक चीज़ मैं बस बोलना चाहता हूँ कि इट इज़ नॉट अबाउट द मनी, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ गिविंग दैट मनी. देयर नीड्स टू बी एन अंडरस्टैंडिंग देयर.
you know, there needs to be that passion towards, अगर आपके producer में वो passion है ना films की तरफ, और एक वो understanding, like कितनी बार me and Rishi have spoken about films like, you know, Godfather, like just the other day we were talking about it, we keep talking about different scenes, we spoke about Pulp Fiction, जब इन्होंने पहला draft देखा था, when he saw the poster, it's not like ये poster देख के he said, oh I love the poster, he gave me an example of why he loves the poster because it reminded him of a character he saw. You know, तो वो सब जो आता है ना, तो उसमें आपको एक मजा भी आता है यार. There's so much fun working with this guy because he understands cinema. इस टाइप के producer, you need more producers like Rishi definitely to create more films like Mirg, because इस टाइप की फिल्म में ना इन्वेस्ट करने वाले और प्रोड्यूस करने वाले इन्वेस्टर्स बहुत कम मिलेंगे. Because this is a little off the beat, unique film, not a clean narrative, you know, so that is very important. It's very unique, very different, and that's why it's very important, you know, you see something different in the cinema, because it's something which is not your typical film. You will be absolutely, you know, you'll be confused, you'll be bewildered, you'll be surprised. It's going to invoke a lot of emotions when you watch it. I honestly think I'm very excited about it. I think it's going to be very interesting. Thank you. Thank you so much.